Whereas most technologies tend to automate workers on the periphery doing menial tasks, blockchain automates away the center. Instead of putting the taxi driver out of the job, blockchain puts Uber out of the job and lets the taxi driver work with the customer directly. Good evening, everyone, and welcome to TechXcelerate 2.0, a virtual technology acceleration program that will provide you with in-depth knowledge and insights into the latest trends of the industry. I, Lavanya Vashne, am thrilled to be your host and guide you through the program. Over the past few years, you have consistently heard the term blockchain technology regarding cryptocurrencies like Bitcoin. In fact, you may be asking yourself, what is blockchain technology? If so is the case, then this is the right platform to gain solid foundational knowledge. Without further ado, let me introduce you to the amazing speaker joining us today. I would like to welcome Mr. Kanishk Khurana. He's a developer relations engineer at Fleek. He's a Web3 mentor at Stanford Web3 AI Lab and a mentor at Global. We are honored to have him as our speaker today, and we are confident that his expertise will provide valuable learning to all the attendees. Stay with us till the end as we have two surprises waiting for all of you. I would like to request Kanishk to commence this event. Absolutely. Thank you so much, everybody, for having me here. Thank you so much, Lavanya, for that lovely introduction. I'm super excited to be here. And it's absolutely an honor for me to be speaking to so many amazing students and so many amazing engineers all around us. So yeah, hey everyone, my name is Kanishk. I love coding. That's the one-liner introduction I always give about myself. I have been coding ever since I was in grade six. Started with very infra level things like QBasic. I wouldn't even say infra level. That's just um, something I started off with. And yeah, now I've devoted most of my career to blockchain, to Web3, to building decentralized technologies and making sure that with decentralization, we are able to give power back to the people who contribute. So that's what today's talk is also going to be focusing on. It's going to be focusing on how you can get into blockchain and you can get into Web3 within 40 minutes of me speaking. We'll be talking about how right after this call, what can you do so that people know you exist in Web3. We will also talk about what is Web3, right? Because we hear a lot around us, hey, there's a Web3 event happening or a Web3 hackathon happening. But it's time today that we discover and learn the difference between blockchain, the difference between Web3, and how you as an engineer can get the most out of this industry. So that's the aim today. Let me present my screen because I do have a nice little presentation created that will cater most of your doubts, most of your confusions and questions that you may have. And I hope that with that said, we can easily move forward. I've started my presentation. I hope it becomes visible in a couple of seconds for all of you. It's visible? Yes, yes. Perfect. So yeah, I lead the developer relations team at a company called Fleek. Fleek is a decentralized infrastructure, and we've developed it to ensure that computation can happen as fast as possible, as securely as possible, and as encryptedly as possible as well. So now before I start, first of all, I want to talk to all of you. I know that most of you cannot unmute your mics. I think that's a setting we have. However, there must be a chat somewhere. So I want you all to please talk to me as much as possible. Communicate with me so that your questions, your confusions can be cleared right in this particular session. And most importantly, if after hearing me speak for, Excuse yeah, me, Dennis. Sorry to interrupt, but everyone can raise their hand so that we can enable them to use their mic. Like in case anyone has any doubt, can anyone wants to communicate. perfect. Yeah, that works for me. So, yeah, I was saying that if during this talk you have any questions, raise your hand. If during this talk you have any problems, raise your hand. If you don't understand something, raise your hand. Or if you just want to share something that, hey, Kanishk, I have an experience with this thing you are talking about,
raise your hand. It should not be like a classroom lecture at any point in time where you just exist, you say present, and you go back. We are not giving attendance, right? We may give some swags to people who are attentive and people who are actually devoted, but of course we are not giving any sort of attendance. So be here because you want to better yourself as an engineer, you want to get a job quickly, and you want to get financially free very very soon, and that should be your motivation. So yeah, um, I think with that said, it is time that we start exploring what decentralized infrastructure is, how you can scale your career in it, and most importantly, what are some important things that we'll be talking about today. First things first, we'll also obviously talk about what blockchain is. We'll talk about Web3, we'll talk about decentralized infrastructure, networking, and storage. At certain points, we are going to cover some core fundamental topics which are technical. And I request you all that if you don't understand what we are talking about in those topics, stop me then and there and ask me, because it will only be your benefit if you ask me. Your benefit. Awesome. Yeah. So, with this said, now let's continue. First thing on the agenda today is blockchains, right? What is blockchains? Why do we work on blockchains? And most importantly, how do we visualize a blockchain? Before I continue, a small poll for everybody. If you want me to continue in Hindi, please raise your hand. If you are comfortable with English, do not raise your hand. Let's see, let's see. Okay, okay. Couple of us are raising our hands. Couple of us are raising our hands. Let me see. Okay, 4 people, 5 people. Okay, it's a mixed batch right now. Cool, works for me. So इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है? दो लैंग्वेजेस के बीच में शिफ्ट करते हैं अच्छे से, आप सबके लिए भी इजी होगा, मेरे लिए भी इजी होगा. इतनी इंग्लिश कौन बोलेगा? ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन क्या होता है, राइट? एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिखता कैसा है? बिकॉज हर कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक को, फिर चाहे वो आपके कंपाइलर्स हो गए, आपके प्रोसेसर्स हो गए, या फिर कुछ भी और हो गया, वेब सॉकेट्स हो गए, हर चीज को विजुलाइज किया जा सकता है. ठीक है, आप एक फ्रंट एंड बनाते हो, एक बैक एंड बनाते हो, ठीक है, एक डेटाबेस होता है पीछे, तो ये सब चीजों को आप विजुलाइज कर सकते हो. हाउ डू यू विजुलाइज अ ब्लॉकचेन इज व्हाट वी विल कवर टुडे. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, फर्स्ट ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग? अभी शुरू हुई है बस. ओके, okay, okay. Oh, wow. Almost all of us are from first year of engineering. No, no, actually not all, but yeah, that's actually a very big number. Insights. Okay, cool. How many of you are from second year of engineering? सिर्फ second year वाले अपने हाथ raise कर लो, please. Second year of engineering. This will help me sort of understand कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया है and क्या क्या चीजें मैं skip कर सकता हूँ from your what do you call it, college curriculum, and I'll make some references to that as well. नहीं will help you connect anyway. Okay, cool. Anybody who's from third and fourth year? People who have already been placed, people who already have good jobs. Anybody like that? Third and fourth years? Okay, now number has decreased a little. Cool, no problem. Okay, so now, okay, nice. I just wanted to see, how many people are present and how many kinds of friends I'll be making today. Because making friends is most important. ये session वेशन होता रहता है यार. Blockchain तो तुम नेट पे भी सब पढ़ सकते हो. It's important for us to become friends and build a connection today that we can take forward, right? This is a form of networking. So yeah, anyway, coming back. How many of you have heard about SQL? SQL, MongoDB, PostgreSQL. Anybody? Okay. काफी लोगों ने हाथ रेस करना शुरू कर दिया है. About, oh wow, more than 20 people have raised their hands so far. काफी लोगों ने सुना हुआ है यार. SQL, MongoDB, PostgreSQL, ये सब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? जिन जिन लोगों ने हैंड रेस करा हुआ है, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो ये बताने में कि ये होता क्या है? If you are interested, now only raise your hand. If you want to tell me what PostgreSQL, MongoDB, SQL, ये सब क्या होता है, अगर आप बताने में interested हो, now raise your hand, right? Lavanya, can we unmute somebody's mic? Let's unmute Chirag's mic. Chirag Kashyap. Okay. हेलो. Hi Chirag, how are you? आई एम फाइन. मतलब एसक्यूएल और मोंगोडीबी ये वगैरह मतलब डेटाबेसेस के लिए यूज होती हैं, डेटा स्टोर करने के लिए. Very good answer. I'll do a
Small round of applause for you. That's a very very good answer and very precise answer as well. Basically ये जितने भी चीजों का मैंने नाम लिया ये होता है डेटाबेस. ठीक है. Now blockchain is also a database. All right. Blockchain is also a database, but blockchain has certain characteristics and certain qualities that make it better than other databases, that make it more secure than other databases, and that make it more usable than other forms of databases जिनका मैंने अभी नाम लिया. You need to keep in mind that all these databases that I mentioned are all centralized. इसका मतलब एक कोई पार्टी है कहीं यूएस सेंट्रल 1 यूएस सेंट्रल 2 कहीं पर बैठी हुई है, उसके पास आपका डेटा है, उसके पास आपका सर्वर है, उसके पास आपका फ्रंट एंड होस्टिंग भी है, उसके पास सब कुछ है. एंड दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड पार्टी. उनका जब मन करे वो आपकी वेबसाइट बंद कर सकते हैं, उनका जब मन करे वो आपका डेटा लेके बेच सकते हैं. So if these days you have been watching too many Arpit Bala reels or too many funny things on Instagram and you keep watching them on a loop, that is because somebody took your data, ran an algorithm on it, you did not even know ये हुआ है आपके साथ, and you kept watching the same thing and आप Instagram पे ही रुके रह गए, नंबर नहीं आए, बैक लग गई. तो इन चीजों से बचने के लिए now a very quick solution that I had in my mind was just use blockchains, right? Because in blockchains your data is chained and linked together. So whatever you do with the data is also linked together. So vision it with me. आपने कोई ऐप यूज किया, आपने कुछ डेटा जनरेट किया हुआ ऐप को यूज करते हुए, सपोज आपने एक फाइल अपलोड कर दी, ये फाइल गई ब्लॉकचेन पे. अब ब्लॉकचेन क्या है? इट इज अ टेबल. आप इसको एक टेबल की तरह मान लो और उसमें हमने ये लिख दिया कि इतने बजे कनिष्क ने ये वाली फाइल अपलोड करी. नाउ इन द फ्यूचर इफ somebody takes that file and does anything on it, वो भी ब्लॉकचेन पे लिख दिया जाएगा. बिकॉज एसेंशियली ब्लॉकचेन क्या है? इट्स लाइक अ टेबल. इट्स लाइक योर इंडेक्स वाला पेज एक नोटबुक का, जिसमें बस ये लिख देते हैं कि कहां पे क्या हो रहा है, एंड वो डेटा भी आपको दिख जाएगा. Which is what makes blockchains so accessible and so transparent. Anything that happens with your data, you will know. So to visualize this, and ये जो चेनिंग वाला पार्ट मैंने बोला, जिसके अंदर हर ब्लॉक को पता है कि उसके पीछे क्या डेटा था, उसके आगे क्या डेटा था, ब्लॉकचेन में क्या डेटा था इन जनरल, ये कैसे देखते हैं हम, ये मैं आपको अब दिखाता हूं. So please envision, here is a visualization of a blockchain. ये डायग्राम है जो आप इंटरव्यूज में भी यूज कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो. ऑल माय प्रेजेंटेशंस आर ओपन सोर्स, आप इसको रख सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज नोट कि हर ब्लॉकचेन के अंदर, फिर चाहे वो इथीरियम हो, बिटकॉइन हो, सोलाना हो, कार्डानो हो, कोई भी ब्लॉकचेन हो, उसके अंदर ये कुछ बेसिक चीजें हमेशा होती है. जो फर्स्ट ब्लॉक होता है, काउंटिंग इन कंप्यूटर साइंस स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ये हम सबको पता है. ठीक है, ये तो हम 9th या फिर 8th क्लास से पढ़ रहे हैं. नाउ प्लीज नोट, एक तो इंडेक्स हो गया. इंडेक्स क्या होता है? कौन सा नंबर का ब्लॉक है ये? 0th नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, नंबर ऑफ दैट ब्लॉक, सीक्वेंस. एक हो गया प्रीवियस हैश. ये देखो प्रीवियस हैश यहाँ पे आता है. फर्स्ट ब्लॉक का तो ऑब्वियसली प्रीवियस हैश 0 ही होगा, उससे पहले तो कोई ब्लॉक था ही नहीं, तो बस 0 डाल दिया, आगे बढ़ो. हैश. अब ये हैश और डेटा, ये दोनों चीजें लिंक्ड होती हैं एक साथ. जो डेटा आप डालते हो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, वो जनरेट करता है हैश को. तो आप डेटा लेते हो, एंड बाय द वे ये ना वो एनक्रिप्शन वाला हैश है, सिक्योरिटी वाला हैश है. तो अगर आप लोग सेकंड या थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो और आप लोगों ने हैशिंग पढ़ ली है, सिक्योरिटी पढ़ ली है, ये एग्जैक्टली वही है. SHA-256, RSA की साइनिंग, ये कुछ हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं. और जब आप डेटा देते हो एक ब्लॉक को या फिर एक ब्लॉकचेन को, वो उस डेटा के ऊपर हैशिंग एल्गोरिदम रन करके एक हैश जनरेट करता है, एंड वो हैश आपकी चेनिंग में हेल्प करता है. तो आप नोटिस करो, ये हैश गया इस वाले ब्लॉक के अंदर एज प्रीवियस हैश, ये हैश गया इस वाले ब्लॉक के अंदर एज प्रीवियस हैश, और इस तरीके से हैशिंग के थ्रू चेनिंग को हम इंप्लीमेंट करते हैं. तो मुझे पता है मेरे पीछे वाले का हैश क्या है, मेरे पीछे वाले को पता है उसका हैश क्या है. अब आप देखो कि ब्लॉकचेन सिक्योर कैसे होती है. सपोज मैं ये वाले हैश को चेंज कर दूं. अब वो हैश को चेंज करने का मतलब है कि ये डेटा चेंज हुआ है, क्योंकि हैश डेटा से बना है, तो डेटा चेंज करूंगा तभी हैश चेंज होगा. ठीक है, तो मैंने फटाफट ये डेटा को चेंज किया. ये वाला कंप्यूटर मैंने हैक कर लिया. ठीक है, जहां पर भी ये डेटा था मैंने हैक कर लिया. मैं बहुत अच्छा हैकर हूं, मैं रशिया से आया हूं, मेरे को सब पता है. मैंने ये हैक कर लिया. जैसे मैंने ये वाला हैश चेंज करा, यू विल नोटिस यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, जितने ब्लॉक्स हैं सब में चेंज करना पड़ेगा. हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट विल टेक सो मच कंप्यूटेशन पावर. इट इज नॉट पॉसिबल ओनली, which is what makes blockchains so secure. You can get the smartest and the best computers in the world. जैसे ही वो डिटेक्ट करते हैं ना कि यार किसी कंप्यूटर से ये हैश चेंज होना शुरू हो गया है, वो उस कंप्यूटर को नेटवर्क से ही किक कर देते हैं. Which is what makes blockchains so secure and so usable.
So this is exactly how chaining works, how security works in a blockchain with the help of data and hashes. एंड चेनिंग का तो हमने देख लिया, हैश एंड प्रीवियस हैश के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं. क्या यहां तक किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी है तो प्लीज प्लीज रेज योर हैंड्स. नहीं है, आपको समझ में आ गया सब कुछ, तो आप एक अच्छा सा रिएक्शन दे सकते हो, आप एक थम्स अप रिएक्ट दे सकते हो मुझे. Okay, Kunal Jan has a question. Let's unmute Kunal and ask his question. Yes, Kunal, what's up? सर आपने अभी कहा कि ऐसे अगर कोई भी हैकिंग हो जाती है तो उस कंप्यूटर को या फिर उस सर्वर को किक कर दिया जाता है, पर अगर हैकिंग इस बेसिस पे बहुत ज्यादा होने लग जाए तो फिर क्या होगा? When you say बहुत ज्यादा, क्या आपका मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स रैपिडली डेटा चेंज कर रहे हैं, बहुत लाइक डीडोस टाइप का अटैक हो रहा है बहुत सारे कंप्यूटर्स पे एक साथ? क्या आप थोड़ा बता सकते हो आपकी हैकिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? सर हैकिंग इन द सेंस कि हमारा डाटा सिक्योर नहीं रह रहा, वो डाटा बहुत जल्दी चेंज हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है उसके साथ. करेक्ट. सो ब्लॉकचेन की ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी ये है कि ये ना बहुत कम्युनिटी ड्रिवन चीज है. जो भी चीज ब्लॉकचेन पे हो रही है वो आप पब्लिकली देख सकते हो. तो द सेकेंड आप देख रहे हो कि किसी कंप्यूटर पे अटैक हो रहा है या फिर कोई डेटा पैरामीटर्स को फोर्सिबली चेंज करा जा रहा है विदाउट अप्रूवल ऑफ द कम्युनिटी और विदाउट रनिंग इट थ्रू द पीपल, तो उस पॉइंट पे ही आप उस कंप्यूटर के आईपी को ट्रैक कर सकते हो और वहीं से आने वाले सारे चेंजेस को रिवर्ट कर सकते हो. तो ब्लॉकचेन अपना डेटा मेंटेन करता है, अपना स्टेट, स्टेट इक्वल्स डेटा, ठीक है. ब्लॉकचेन अपना स्टेट मेंटेन करता है और जैसे ही कोई अटैक होता है स्टेट के ऊपर, वो अटैक वाले नोड को हटा देता है, अटैक वाले कंप्यूटर को हटा देता है और अपने स्टेट को रिवर्ट कर देता है. ये फंक्शनैलिटीज चेन्स के अंदर इनबिल्ट आती हैं. दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज तो कोई भी अटैक कर सकता है. अब मैं 10,000 कंप्यूटर जोड़ दूं, सारे के सारे गेमिंग वाले, ठीक है, और एक दिन के लिए अगर मैं काउंटर स्ट्राइक ना खेलूं, तो मैं ले सकता हूं फिर तो ब्लॉकचेन के ऊपर एक्सेस, पर वो नहीं होगा जस्ट बिकॉज ये सारी चीजें सिक्योरिटीज इनबिल्ट हैं चेन के अंदर. बट गुड क्वेश्चन. Anybody else? Anybody else? Awesome. Okay, cool. No questions. That's nice. Either I am explaining very nicely or half of you are asleep. I guess हमें end तक पता चल जाएगा क्या सच है. Now let's move forward. The next topic I want to talk about is Web3. आप में से कितने लोगों ने आज से पहले एक ऑफलाइन या ऑनलाइन Web3 इवेंट अटेंड करा है जिसके अंदर ब्लॉकचेन्स के बारे में कुछ बात हुई हो? कोई है यहाँ पे? हैंड रेज कर सकते हो आप अपना. आर्यन पिल्लई ने अटेंड करा है, शुभम ने अटेंड करा है, वेरी गुड. कोई और? इंद्रजीत ने करा है, दीक्षा शर्मा ने करा है, कृष ने भी शायद किया था हाथ, राहुल ने करा है, वेरी गुड. Krish Mishra, yes. Okay, cool. So the reason I'm asking all of this is because now in this year, you will notice कि भाई blockchains के around तो बहुत शोर मच रहा है. Because I am doing an event on 17th of February. My friends are doing an event on 27th of February. There's a lot happening throughout the blockchain space, throughout India, throughout Delhi. And Delhi is like the best hub for blockchain. So if you are in Delhi, I'm assuming BPIT Delhi में है, तो आप लोग भी mostly सारे Delhi से ही होगे. तो आना जरूर इन इवेंट्स पे, बिकॉज यू विल लर्न मोर देन व्हाट इज बीइंग टॉट हियर एट दोज इवेंट्स. सो द रीजन आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज बिकॉज अभी हमने ना कुछ चीजें डिस्कस करी, ठीक है, और पहले, जिससे पहले आप ये पढ़ो, आई वांट कि आप ये बेनिफिट्स पढ़ के देखो, ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन ये तो हमने पढ़ ही लिया, ब्लॉकचेन्स के अंदर होता है डिसेंट्रलाइजेशन. ब्लॉकचेन्स होती हैं इम्यूटेबल, और ब्लॉकचेन्स में जो डेटा आप जनरेट करते हो उसके मालिक आप ही हो. कोई सेंट्रलाइज्ड एंटिटी आपके डेटा के ऊपर पैरामीटर्स रन करके आपको वापस इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो डेटा के ओनर आप हो, और उस डेटा पे कुछ भी करने से पहले लोगों को आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है. उसके बाद ऑब्वियसली आप कभी भी अपने ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन पे रन कर सकते हो. ये एसबीआई की तरह नहीं है जहां पर आपको लंच ब्रेक का वेट करना पड़े, या फिर स्कूल की तरह नहीं है जहां 8 बजे से 2 बजे तक ही काम होगा. ये आप कभी भी कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है. तो वॉशरूम जाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और अनइंटरप्टेड है. एट एनी पॉइंट इन टाइम यू कैन डू वट एवर यू लाइक एंड द सिस्टम इज ऑलवेज रनिंग. These are some qualities that are of Web3, but you will also notice that blockchains have the same qualities. Blockchains are also decentralized. Blockchains are also decentralized and they are immutable and you get your own data. ये सारी qualities. So Web3 is an ecosystem. It is a group of people who believe that data and access to that data
should be decentralized, should be immutable, should have your ownership, should be uninterrupted, open and permissionless. तो क्योंकि ब्लॉकचेन की और वेब 3 की सारी क्या कहूं मैं, सारे के सारे इनका फैक्टर सेम है, सारी इनकी क्वालिटी सेम है, इसीलिए वेब 3 is an ecosystem that is built on top of blockchains. So blockchain is the base layer for Web3 and ये जितने सारे लोग हैं ये सारे blockchains के थ्रू अपना काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, whatever they do. So this ensures that Web3 is an ecosystem of people that is built on top of blockchains. I hope this was explanatory to all of you because ये बहुत फंडामेंटल चीज है कि आपको Web3 ये सारे बेनिफिट इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि वो ब्लॉकचेन्स के ऊपर बना हुआ है. ठीक है, अब Web2 के अंदर क्या होता है कि सेंट्रलाइज डेटा होता है, डेटा चेंज भी हो सकता है, आप तो ओनर हो ही नहीं अपने डेटा का, भूल जाओ कि आपका एक भी पासवर्ड आपका था या है या रहेगा. परमिशंस आपको हर एंड पे लेनी पड़ती हैं. ठीक है, 9 बजे मार्केट खुलती है, 5 बजे बंद हो जाती है, 3 बजे बंद हो जाती है इनफैक्ट, तो ओपन भी नहीं है. And it is very, very interrupted. Servers can go down, services can go down, and complete economies can shut down. But with Web3, all of that becomes the opposite. And you are in control of your data and all the access that you want. I hope this was explanatory. नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछे कि Web3 क्या है, आप उन्हें एक लाइन में बोल सकते हो, इट इज एन इकोसिस्टम बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ब्लॉकचेन्स. कोई पूछे ब्लॉकचेन क्या है तो उन्हें बताना इट इज लाइक अ डेटाबेस दैट इज इम्यूटेबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड एंड इंफॉर्मेशन हैज इंफॉर्मेशन इज परमिशनलेस, इट इज ओपन, इट इज अनइंटरप्टेड, ये सब बोल सकते हो आप. ठीक है, ये सब ओके. सो आई होप यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है. कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी. We have about 87 people. That is a very good number. Let's continue. Moving forward. Oh yeah, if you guys are interested in what's happening around you, I would appreciate if you scan this right now. Tweet it out. Let the world know that you are a part of Web3. ये क्यों करना है मैं आपको एंड में भी एक बार फिर से बताऊंगा when we will talk about careers in Web3. But if you sort of scan this right now, you can get a lot of opportunities. ठीक है, and in the future events that we will collaborate and work together, we will definitely provide you swags as well. But today it's more about putting you in Web3. So this tweet is totally created to put you in the Web3 ecosystem. Most of the people in Web3 will be found on Twitter, which is what makes it very, very easy for you to just scan it and tweet it out and be a part of the ecosystem. And I'll be watching all these tweets. I'll be seeing some good people and I'll be reaching out to them after the event as well. That is my responsibility. Now let's move forward. अब टाइम है एक बहुत टेक्निकली एडवांस्ड टॉपिक पढ़ने का. इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो आपको एज इजी एज पॉसिबल मेथड से समझा पाऊं. लेकिन आई वॉन्ट कि इस पॉइंट पे अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आए अबाउट कंसेंसस तो वो आप यहां से क्लियर करके जाओ. मैंने बड़े बड़े फाउंडर्स को गलती करते हुए देखा है व्हेन दे टॉक अबाउट कंसेंसस मैकेनिज्म. आई हैव सीन इंजीनियर्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज who can't go from A to B when they talk about consensus mechanism. So please focus on what I'm about to talk right now. So first things first, don't look at the slide right now. Just tell me one thing, that how many of you are in college? You can just raise your hands. Okay, one person is in college so far. Only Krish. Oh wow, okay, my screen was lagging. All of us almost are in college right now. That's nice, that's nice. हाथ raise ही हुए जा रहे हैं. Great. I was just assuring that most of you are awake. That's nice. So the reason I was asking this is because जब आप लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया, ठीक है, बीपीआईटी इज अ पार्ट ऑफ जीजीएस आईपीयू आई एम गेसिंग. तो जब आप लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया तो आप सब लोगों ने एक अग्रीमेंट किया अपने कॉलेज के साथ. और यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन नाउ. थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग विद दैट. सो जब आप लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया तो आप लोगों ने एक अग्रीमेंट किया अपने कॉलेज के साथ. आपका अग्रीमेंट ये था कि कॉलेज भाई हम आपके पास आएंगे 4 साल तक, हम एग्जाम्स देंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, अटेंडेंस के लिए सर्दी गर्मी में आएंगे 4 साल तक. एंड यू नो एंड में हमारी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें एक डिग्री दे देना और एक जॉब दे देना. तो कॉलेज ने बोला ठीक है भाई, बात करेंगे 4 साल बाद. तो पूरा ही एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट हुआ आपके और आपके कॉलेज के बीच में. ठीक है, एंड इस अग्रीमेंट को अगर मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो उसे कहते हैं कंसेंसस. What is consensus? It is an agreement between two parties, and this consensus tells कि इस agreement के अंदर क्या क्या तरीके से काम होगा. तो ये बोलना मेरा कि आप कॉलेज आओगे, आप असाइनमेंट्स करोगे,
ये सब आपके कंसेंसस में लिखा हुआ है बिटवीन यू एंड योर कॉलेज. इट वाज आल्सो रिटन बिटवीन यू एंड योर स्कूल, एंड आगे जाके जब आप जॉब करोगे तो उसमें भी लिखा होगा. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट होगा बिटवीन यू एंड सम अदर पार्टी दैट यू आर वर्किंग विद, कि काम कैसे होगा, क्या होगा, एवरीथिंग. इसे कहते हैं कंसेंसस. कंसेंसस माने अग्रीमेंट. अब किस तरीके से ये अग्रीमेंट हो रहा है उसे कहते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म. ओके, सो कंसेंसस मींस अग्रीमेंट. द प्रोसेस टू गेट टू अ कंसेंसस, गेट टू एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड कंसेंसस मैकेनिज्म. सिंपल. ठीक है. अब आपने ये नोटिस किया होगा कि जब मैं ब्लॉकचेन्स की बात कर रहा था, तो ये जो इतना सारा डेटा है, ये मैं भी पुश कर रहा हूं ब्लॉकचेन्स पे, आप भी पुश कर रहे हो, कोई अमेरिका में बैठ के पुश कर रहा है, कोई यूरोप में पुश कर रहा है, कितने सारे लोग एक सिंगल टाइम पे ब्लॉकचेन्स पे अपना डेटा पुश कर रहे हैं. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्रोसेस डिफाइन हो, एक तरीका डिफाइन हो जिसके थ्रू वो डेटा प्रॉपरली पुश हो पाए. ऐसे तो कोई भी कभी भी कुछ भी पुश करता रहेगा कभी, और इतने सारे ब्लॉक्स को पता नहीं चलेगा कि भाई मैं कौन सा डेटा हूं, मैं कहां से आया हूं. और इतने कंप्यूटर्स जो ब्लॉकचेन्स पे एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ये सब कुछ मैनेज करने के लिए हमने बनाया कंसेंसस मैकेनिज्म. ओके, the first consensus mechanism is called proof of work. Now, before you read the slide, one quick question. How many of you went to a coaching institute for 11th and 12th? ठीक है, FITG, VMC, आकाश, raise your hands. Again, अब लंबी सी लड़ी लगेगी उन सबकी जिनको IIT जाना था पर दुनिया के कोई और ही प्लान थे उनके लिए. बुरा ना मानो दोस्तों, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ इसमें. इंटरेस्टिंग. ओके, सो मेरा लैपटॉप हैंग हो जाता है एवरी टाइम आई आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस आर वेरी वेरी इंटरेक्टिव टुडे. गुड. So the reason I'm asking all of this is because do you remember in that coaching the environment was so competitive, right? The second your teacher would come give you some questions, everybody would start racing against each other. इसी सिनेरियो में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आपकी क्लास में एक टीचर आई. टीचर ने आते ही बोला कि देखो मैं ये 10 क्वेश्चंस लाई हूं, जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसकी छुट्टी हो जाए, उसको सब आता है. पर ऑल द वे फ्रॉम द सेकंड पर्सन जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है टू द लास्ट पर्सन किसी को कुछ नहीं मिलेगा. वो बैठेंगे अभी पूरे के पूरे 9 घंटे क्लास लगा के जाएंगे. तो इस केस में क्या होगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स रेस लगाने लग जाएंगे. ठीक है, कंपटीशन शुरू हो जाएगा. कुछ लोग गूगल करने वाले होंगे, कुछ लोग चीटिंग करेंगे, कुछ लोग तो गिव अप ही कर देंगे, छोड़ो भाई हम तो क्या ही है, हमारे तो पापा ने सीट खरीदनी है, हमें क्या मतलब. ठीक है, और कुछ लोग फाइनली अपनी मेहनत करेंगे, जो प्रॉपरली सम्स को सॉल्व करने लग जाएंगे. वो डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे, वो वेक्टर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. सो इसी सिनेरियो में अब इमेजिन करो कि मैं एक ब्लॉकचेन के अंदर हूं जिसके अंदर मुझे डेटा डालना है. अब जब भी आपको डेटा डालना है, किसी ना किसी कंप्यूटर को तो वो डेटा लेके उसका हैश जनरेट करना होगा. जो हमने अभी अभी पढ़ा कि आपको ये डेटा लेके इसका हैश जनरेट करना होता है, किसी ना किसी कंप्यूटर को तो करना होगा. जो कंप्यूटर इसको सबसे पहले करता है उसको मिलते हैं थोड़े से पैसे. और आप ये दिन में 10-15 बार कर सकते हो, जितनी बार भी आपका कंप्यूटर अच्छा हो, फटाफट सॉल्व करो, आपको पैसे मिलेंगे. इसे कहते हैं माइनिंग. ठीक है, बिटकॉइन माइनिंग. कोई भी टोकन की अगर माइनिंग हो रही है तो उसमें हो रहा है प्रूफ ऑफ वर्क, और उसके अंदर आप डेटा लेके उसका हैश जनरेट कर रहे हो. अब जो कंप्यूटर इसको करता है उसको मिलते हैं पैसे. तो दिस इज योर इंसेंटिव टू पुट योर कंप्यूटर ऑन अ ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, ताकि आपको पैसे मिलने शुरू हो जाए बस बैठे रहने के, एंड ब्लॉकचेन चलती रहे आपके कंप्यूटर की वजह से. ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर है. आई थिंक चंदन हैज अ क्वेश्चन. चंदन, लेट मी गिव यू माइक परमिशंस so that you can ask your question. Can you unmute your mic and ask your question now? Okay, no problem. Whenever you come back, we'll be here for you. Now moving forward, अब आप imagine करो कि हम इन कंप्यूटर्स पे वापस आ गए. ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है, मैंने डेटा डालना है ब्लॉकचेन पे, किसी ने उसका हैश जनरेट करना है, सारे कंप्यूटर्स रेस में लग जाते हैं. अब जाहिर सी बात है, जिस कंप्यूटर के पास बेटर ग्राफिक्स कार्ड होगा, बेटर रैम होगा, बेटर मेमोरी होगा, वो फटाफट सॉल्व कर लेगा और उसको बेनिफिट मिल जाएगा उसका. ठीक है, पर ऑल द वे फ्रॉम द सेकंड कंप्यूटर जो सॉल्व कर पाता है टू द लास्ट कंप्यूटर, इवन द कंप्यूटर्स जो सॉल्व ही नहीं कर पाते. सपोज मेरे पास एक बहुत गंदा सा एसर का लैपटॉप पड़ा, कुछ भी नहीं कर पाता, वो गूगल भी नहीं चला पाता, वो क्या करेगा, राइट? तो इस केस में
आप नोटिस करो कि इन सारे कंप्यूटर्स की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हुई, पावर वेस्ट हुई, कंप्यूटेशन एनर्जी वेस्ट हुई, सब कुछ वेस्ट ही हुआ यहाँ पे बस। ठीक है, सिर्फ एक कंप्यूटर को बेनिफिट हुआ, उसको पैसे मिले, वो बड़ा खुश है। प्रोबेबली वो कंप्यूटर फिर से जीत जाएगा क्योंकि उसमें कंप्यूटेशन पावर इतनी है। बट ऑल द वे फ्रॉम द सेकंड टू द लास्ट किसी को कुछ नहीं मिला। इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। कंप्यूटर्स नीड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑल these computers are very very powerful and they get rewarded when they successfully solve. जब हम प्रूफ ऑफ वर्क की बात करते हैं तो उसमें आता है माइनिंग। ये जो भी मैंने प्रोसेस बताया हैश जनरेट करने का, पैसा मिलने का, व्हाटएवर, इसे कहते हैं माइनिंग। पर आपने ऑब्वियसली अभी तक नोटिस कर ही लिया है कि बड़ा वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि सेकंड से लेके लास्ट तक को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही, पैसा वेस्ट हो रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसके अंदर अब आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में आओ अपने कंप्यूटर के साथ और थोड़ा सा पैसा स्टेक कर दो कि ये मेरा हिस्सा है आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क में। एंड जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो रैंडमली एक कंप्यूटर को पिक करता है और बोलता है लो भाई आप सॉल्व कर लो। इस टाइम रेस नहीं लग रही और आप जितना पैसा स्टेक करोगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के। सो दिस विल सेव यू मेमोरी, दिस विल सेव यू रैम, दिस विल सेव यू एनर्जी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी कोई ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आता है, it starts saving 99.99% of energy, which is a very big deal. Because आज अगर इथेरियम पे 2700 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इमेजिन करो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते होंगे। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी। एंड इंडिया में तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी सब्सिडाइज्ड, यूएस, यूरोप, इनमें बहुत बिल आता है लोगों का। तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, कितना बिल पे करते हैं, जस्ट इमेजिन। इसीलिए प्रूफ ऑफ स्टेक इज अ वेरी गुड सोल्यूशन बिकॉज अब आप बस पैसा स्टेक करो एंड यू कैन गेट स्टार्टेड। सो दिस इज व्हाट अ कंसेंसस मैकेनिज्म इज। हमने प्रूफ ऑफ वर्क की बात करी, हमने प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करी। प्रोसेस वही है, डेटा लेके हैश जनरेट करना है, बस इसमें रेस नहीं लगती। सब आराम से बैठे, हाँ भाई जब नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी हम कर देंगे डेटा को हैश, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज व्हाट कंसेंसस मैकेनिज्म इज। अगेन दिस इज अ वेरी फेमस इंटरव्यू टॉपिक। आप अगर किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दोगे फॉर Web3, दिस विल बी आस्क्ड and we at Fleek always ask this. Even when I take interviews at Stanford University, we always ask this. And वहां पे Stanford graduates आके गलतियां कर रहे होते हैं इन चीजों में। So we want to ensure that we start with you and हम आपको foundationally सब कुछ सिखाएं ताकि आपके लिए easy हो आगे लाइफ में पढ़ना और आगे लाइफ में blockchain and Web3 में बढ़ना। So yeah, that's majorly what consensus mechanism is. क्या किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ ऐसा है जो मुझसे पूछना चाहते हैं? Cool, 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 cool. Okay, nice, nice, nice. Do you want a break? People who are with me, we have been here for 35 minutes. If you want a break, raise your hands. Okay, nobody has raised their hands. That's very interesting. Nice. Let's move forward. Okay, cool. Now I'll talk about something that we are building at Fleek, something that I'm very, very excited about to share with all of you, and something that you will soon be able to contribute and collaborate with us. So at Fleek, we are building something called a decentralized infrastructure, which means मैंने जितनी चीजों के बारे में अभी तक बात करी, blockchain, security, hashing, data, consensus, we are building all of this in-house. We've got a team that is globally working on all of this, and our main focus is that with the help of Fleek infrastructure, which is obviously decentralized, with the help of our infrastructure, computation can become faster, data can become more secure, and your access to blockchain can become easier. ठीक है, एक centralized architecture में, suppose you use AWS today, ठीक है, for those of you who are in DevOps या फिर आप लोगों ने आज से पहले एक भी बार कोई सर्वर डिप्लॉय करा है, आपने ये तो 100% नोटिस करा होगा कि आपको ना एक एनवायरनमेंट में चूज करना पड़ता है कि आपका रीजन क्या है। अब आप अपना सर्वर मुंबई में डिप्लॉय कर रहे हो, यूएस में कर रहे हो, यूके में कहीं कर रहे हो, यूरोप में कहीं कर रहे हो, वो आपको चूज करना होता है। द कूल थिंग अबाउट फ्लीक इंफ्रास्ट्रक्चर इज कि आपको जो भी डेटा अपना डिप्लॉय करना है वो पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिप्लॉयड है, एंड जो भी कंप्यूटर आपके सबसे पास है वो आपको डेटा सप्लाई कर रहा है, इंस्टेड ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज सिटिंग इन यूएस सेंट्रल वन विच इज एन अमेज़न का रीजन। तो वहां से डेटा आने में जो टाइम लगता है, या फिर आपके साइड में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, जो फ्लीक का एक नोड है वो पड़ा हुआ है आपके साइड में, कौन आपको डेटा जल्दी दे पाएगा? ऑफ कोर्स द नोड दैट इज जियोलॉजिकली क्लोजर टू यू।
And that is something we are building at Fleek. We are trying to make it very transparent so that you can see your data. All of our code is open source. You can go to Fleek Network's GitHub repository today and you can see the Lightning client that we've built out. And this is exactly what a decentralized infrastructure is, right? The next and most important thing here is the network itself. ठीक है, आपने infra बना दिया. infra पे आप कुछ भी कर सकते हो. But to scale, you need a network around it. अब नेटवर्क की सबसे खास बात यह है कि लोग उसमें आके अपना कंप्यूटर लगा सकते हैं एंड जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड है वो रन कर सकते हैं. And that is why you get all these benefits, which is better efficiency, better speed, better scalability. The entire internet, the entire world of developers, not even web3, web2, web1, जो भी आपको इंक्लूड करना है करो, उन सबकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि यार मेरी वेबसाइट जल्दी खुले, मेरा सर्वर जल्दी रिस्पॉन्ड करे और मेरे पे अटैक्स कम हो, मैं सिक्योर हो जाऊं. एंड ये सारा कुछ तभी पॉसिबल है जब एक सेंट्रल एंटिटी में आपका डेटा नहीं है. When it is distributed across a network, the entire network is your security layer. And if you get hacked, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था, एक ही कंप्यूटर हैक होगा, हटा देंगे उसको. And that is the most important thing, and that is exactly what a network does and how it allows you to grow as a product or as a project or whatever it is. All right, and you don't need a central server. That is the best part. तो AWS आपको किक नहीं कर सकता because आप AWS पे हो ही नहीं, आप तो Fleek network पे हो. And that is why we want developers to be a part of our team. Finally, one of my favorite features is that decentralized storage is a very big part of Fleek network, of decentralized infrastructure in general. कि जो भी डेटा मुझे आपको प्रेजेंट करना है, सपोज आपने मेरी वेबसाइट देखनी है, उस वेबसाइट का जो भी कोड होगा, सपोज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट 3 फाइल्स लिखी मैंने, उसको मैं कहीं तो डालूंगा ना ताकि आप उसको देख पाओ, ताकि आप उसको रन कर पाओ. And when you put it on the blockchain infrastructure, it's called decentralized storage. So what we do is you put files on the decentralized storage, we pick it from there, we run it on the Fleek network, and every node is now a server. हर नोड आपकी फाइल्स को डिप्लॉय कर रहा है एंड आप किसी के भी थ्रू अपनी वेबसाइट को व्यू कर सकते हो. दिस मेक्स डेवलपमेंट इन जनरल वेरी फास्ट बिकॉज आपका सारा ध्यान जा रहा है कि यार मैं अपना बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनाऊं, एंड हमारा सारा ध्यान जा रहा है कि यार मैं इनके प्रोडक्ट को सबसे अच्छे तरीके से डिप्लॉय कैसे करूं, इनको सारे फीचर्स कैसे दूं. एंड दैट इज व्हाई वी वर्क टुगेदर. And again, code is open source, so please feel free to check it out if you have time. This is exactly what decentralized storage is, putting your files on a P2P network. Decentralized network, peer-to-peer network, ये सब सेम होता है. ठीक है, आप नेट पे बहुत जगह पढ़ने वाले हो, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, सब सेम होता है. अगर आप लोग अभी 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो, आपके इंजीनियरिंग में भी एक सब्जेक्ट होगा कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी. आई थिंक सो, CNS मुझे नाम याद है उसका. तो उसमें ये होता था कि आप कीज के बारे में बहुत पढ़ोगे, सिक्योरिटी कीज, क्रिप्टोग्राफी कीज, एटसेट्रा एटसेट्रा. This decentralized storage is also very important from that key point of view, because जैसे ही कोई फाइल decentralized storage पे आती है, उसके डेटा को encrypt किया जाता है ताकि वो malicious use purposes के लिए यूज ना हो पाए. एंड वहां पर भी तो क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट आता है. एंड हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं आज इन हैशेस के बारे में, ये भी क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है, राइट? सब कुछ सेम है. सो आई होप दैट दिस वाज अ नाइस रिफ्रेशर फॉर यू. If you haven't tweeted till now, I request you all to please take out your phones, tweet, let the world know that you are a part of the Web3 ecosystem. I'll be on the lookout for good developers after this session, and I will do that through Twitter. So please make sure that you tweet, and we'll obviously stay in touch. I want to ask, now that we've sort of reached the end of the session, how many of you have any questions, anything that I can answer for you, anything at all? So अब stage open है आप सबके लिए. अब हम बातें करेंगे. We have a lot of time left, and I'm very happy to see that we got till this point without major hiccups. So I have a lot of information to share now from the point of view of jobs, right? अब jobs के बारे में थोड़ी बात करते हैं. How do you get started? मैंने आप लोगों से ये ट्वीट इसलिए करवाया आज बिकॉज Web3 runs on Twitter and Web3 runs online. आपसे कोई ऐसे आपके कॉलेज में आके ऑन कैंपस कोई Web3 कंपनी रिक्रूट नहीं करने वाली, बिकॉज व्हाट वी बिलीव इज आपकी कॉलेज डिग्री के ऊपर, आपके नाम के ऊपर, आपकी एज के ऊपर आपकी स्किल्स है. स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए आपको अपनी स्किल्स को पोर्ट्रे करना पड़ेगा, एंड वो होता है ट्विटर के थ्रू. अगर आप थोड़ा कंटेंट लिखते हो अराउंड Web3, आप कंटेंट लिखते हो अराउंड थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट, आई माइट आस्क यू कि यार आओ ना साथ में कंटेंट लिखते हैं, लेट्स मेक अ वीडियो टुगेदर.
I will be doing more of such sessions throughout the year. Let's do these together, right? That might be my mindset. So writing content is very very important, and आज आप सारे content writers बन गए, जिसने भी tweet करा है, you're all content writers, you're already in web3. People in web3 will know you today. So that is very very important. Now second, if you want to become an engineer, you want to write blockchain code, how do you get started, right? First thing, आपको अपने वेब 2 के फंडामेंटल्स को बहुत क्लियर करना पड़ेगा. अगर आप आज मेरे सामने एक बेसिक रिएक्ट ऐप नहीं बना पा रहे, तो मैं आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का काम क्यों दूंगा? बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि आपके पास एक बहुत लंबा लर्निंग पाथ बचा हुआ है. सो स्टेप 1 टू बिकमिंग अ गुड वेब 3 डेवलपर इज बिकमिंग अ गुड वेब 2 डेवलपर. आपके क्या कहते हैं, आपके रिएक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, यू शुड नो हाउ टू वर्क ऑन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. आपको आना चाहिए कि यार एसक्यूएल में हाउ डू आई सिलेक्ट थिंग्स, हाउ डू आई डिलीट थिंग्स, हाउ डू आई अपडेट थिंग्स. ये बेसिक्स आपको आना चाहिए. आपको प्रो बिल्कुल भी नहीं होना. आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू बी द बेस्ट डेवलपर इन द वर्ल्ड टू गेट इनटू वेब 3. You just need to have some sort of understanding around how you can work and how you can scale databases. All right. That is the first thing. Now the second thing, you don't necessarily need to be just an engineer to be in web3. You can also become somebody who runs a community. For example, namespace community is doing a very good job in getting like 100 people for a session, and talking about things that we are passionate about. So just organizing events and helping people around you is a big part of web 3. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने किस किस की बात कर ली, एक बार समअप करते हैं. कंटेंट राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, ठीक है. आप आज के इवेंट के बारे में भी लिख सकते हो कि मैं ये इवेंट पे गया, मैंने ये सीखा, मुझे बड़ा मजा आया, अब मैं आगे जाके ये करूंगा, ठीक है. ट्वीट में भी बेसिकली यही था जो आपने किया. सेकंड, हमने बात करी इंजीनियरिंग की. इंजीनियरिंग करनी है तो पहले वेब 2 अच्छे से करेंगे, फिर वेब 3 में आएंगे. वेब 3 में आते ही सबसे पहले हमने जो लैंग्वेज सीखनी है उसका नाम है सॉलिडिटी. सॉलिडिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉलिडिटी सीखना बहुत जरूरी है. वो आपके बेसिक्स है, SOLIDITY, ठीक है. फाइनली जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो आप एक लेवल पे आते हो जहां पे आप मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हो, विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. एंड ये सब भी वेब 3 का बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज ये जो हम बना रहे हैं ये भी तो एक प्रोडक्ट ही है, राइट. फ्लीक इज अ प्लेटफॉर्म एज वेल. आप अपनी वेबसाइट को जाके जब फ्लीक पे डिप्लॉय करते हो, दैट इज अ प्रोडक्ट वी हैव. सो यूजिंग फ्लीक एज अ प्रोडक्ट, you can very easily put your websites on the blockchain, ठीक है. And if you want me to give you a quick demo, I would love to do that. Let me switch my screen, and it's time that I actually walk you through deploying your websites on Fleek, because I'm very very excited to show all that to everybody that I talk to. So yeah, that's basically how you can very easily work. One second, there we go. Is my screen visible to everybody? Same ही चीज पे होगा अभी. Screen दिख रहा है? Can anybody confirm? Okay, I think Chirag just confirmed. Okay, thank you, Chirag, for Yes. that thumbs up. Also confirmed. Thank you, Lavanya. Great. So now let me quickly walk you over what Fleek can help you with and what we have sort of been working for. ठीक है, आ जाओ फटाफट करते हैं. Fleek, here it is. So this is the website we have, fleek.xyz. Using this website, you can put lightning fast Web3 apps on the chain. When I say lightning fast, I mean that all you have to do is build anything, and we can do it and we can help you in deploying it. So let me go to join alpha. अगर आपको access चाहिए, so this is under alpha right now, which means हम बहुत selected developers को access दे रहे हैं, because we still are in the alpha stage of pushing it out. अगर आपको access चाहिए, मेरा Twitter handle ये रहा, आप लोग मुझे आके ping कर सकते हो Twitter पे, and we can definitely work together. This is me, Kanishk Khurana _ on Twitter. Give me a follow, stay in touch with me. I work a lot with developers on a daily basis. That is literally my job. So ping me here if you want access to Fleek platform, and I will make sure कि आपका ये पूरा process बहुत smooth हो and आप चीजें सीखो. So when you come to Fleek, you can put your files on IPFS. मैंने बताया था ना, आप storage के लिए चीजों को use कर सकते हो. तो आप ये देखो, ये एक फाइल मैंने पहले डाली थी, ये IPFS पे exist करती है. वो हमारा decentralized storage platform है. आपको याद है decentralized storage? फाइल्स जाती हैं peer to peer network में, ये वो है. ठीक है, चलो वापस चलते हैं फटाफट. अब हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट को भी डिप्लॉय कर सकते हैं. You go here, you say deploy a site, and I have deployed 2 sites here, one of my friend and one of my own. So let's quickly go through deploying a template. Okay, template के अंदर हम क्या करते हैं कि हम आपके लिए एक बेसिक रिएक्ट ऐप या फिर एक बेसिक Next.js ऐप, आई एम श्योर ये सारी टेक्नोलॉजीज का आपने नाम तो सुना होगा, आपने चाहे यूज नहीं किया हो, अगर आपके पास एक गिटहब अकाउंट है, आप ये सब कुछ एक्सेस कर सकते हो.
So what you can do today is you can quickly go to our platform and deploy your own React app. React app को आपने डिप्लॉय कर दिया, वो चेन पे काम कर गया, वो चल रहा है. अब आप चेंजेस करते रहो, आप जैसे ही पुश करोगे चेंजेस को, वो फिर से डिप्लॉय हो जाएगा. And continuously, we can become your partners in helping you build faster and more scalable applications. So I click on React template. Okay. Since this is an alpha, I will be talking through a little bit of things that will help you. Okay. React template आ गया. I click on deploy template. Simple and easy. जैसे ही मैंने deploy template पे क्लिक करा, हम एक next page पे जाएंगे और वहां पर सबसे पहले मुझे इसको GitHub यूज करने का एक्सेस देना पड़ेगा. एंड जैसे ही आपने GitHub एक्सेस दिया, आपका टेम्पलेट डिप्लॉय हो जाएगा. एंड दैट टेम्पलेट विल स्टार्ट लुकिंग समथिंग लाइक दिस. जैसे ये मेरा Next.js का टेम्पलेट है, ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है. वेरी वेरी बॉयलर प्लेट कोड, एंड आप इसको जैसे चाहो मॉडिफाई कर सकते हो. एंड दिस यूजेस टेलविंड बाय द वे. सो अगर आप लोगों ने टेलविंड का नाम सुना है, दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू वर्क विद. नहीं सुना तो आई एम हैप्पी टू टीच यू टेलविंड एज वेल. दिस इज द एंटायर टेम्पलेट. We have a very good documentation around helping developers build on it quickly. Here you go. सारे डॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए. नहीं मिलता आप मुझे पिंग करो. I'll be your point of contact and support in not just this but teaching you development in general. I've devoted my entire life to software development and this is what I do full time. So not just this, I can help you build mobile apps, I can help you build web apps, servers, anything. And yeah, that's mostly it. So with this, we come to the end of today's session. We've gone over a lot of things. I think I can stop sharing my screen now, and it's time for more questions if you guys have any, or we can conclude and talk later on Twitter or talk later on Discord. Hey Chandan, what's up? Hello, so am I audible? Yes. So I'm asking कि like if जो NFT है, is it dependent on blockchain? And if yes, then how it is working? Great question. So yes, NFTs are dependent on the blockchain. NFT का ना एक full form होता है, उसे कहते हैं non-fungible token. Yeah. NFTs basically are tokens that you can trade, right? एक आप इसको ऐसे मान लो जैसे आपने बचपन में वो खेले WWE वाले कार्ड्स आते थे, अंडरटेकर बना होता था उसमें. Yes, sir. खेला है आपने? तो उनो की तरह भी हो, आप इसको ले सकते हो. सो बेसिकली दीज आर टोकन्स, दिस इज करेंसी दैट लिव्स ऑन द ब्लॉकचेन. एनएफटीज की खास बात यह है कि अगर मैंने अपना एक एनएफटी बनाया और उसको डाल दिया ब्लॉकचेन पे, तो वो अपने तरीके का सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर सकता है. देयर कैन नॉट बी टू टोकन्स ऑफ द सेम काइंड. एनएफटी का मतलब नॉन फंजिबल, मतलब मेरे तरीके का एक ही है, ठीक है. दैट इज द कूल पार्ट अबाउट नॉन फंजिबल टोकन्स. तो ये जितनी बंदरों की फोटोज आप इंटरनेट पे देखते रहते हो from time to time, especially if you are on Twitter, you would have seen a lot of people with monkeys in their NFTs, in their profile pictures. So वो सारे NFTs हैं. NFTs live on the blockchain. एक NFT की तरीके का एक ही एलिमेंट पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकता है. दो तरीके के ऐसे सेम नहीं हो सकते. उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन हमेशा होगा. एक बंदर ने शायद ग्लासेस पहने होंगे, एक ने नहीं पहने होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन हमेशा होगा, ठीक है. एंड जो फोटो होती है वो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज पे एग्जिस्ट करती है. जो उसके पीछे का कोड होता है वो भी स्टोरेज पे एग्जिस्ट करता है और नेटवर्क उसको प्रोपगेट करता है पूरे वर्ल्ड में. इसे कहते हैं NFTs. आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. इफ नॉट, Yes, sir. yes, okay, cool. So, Are you? so I have one more question too. Please go forward. So I get it silly, but can you answer? Like, I am Go for asking why should I do blockchain instead of any other stack? So the cool part about you being an engineer is you don't have to stick to blockchain. It is just another technology for you to learn. आप आज सीखो, आप कुछ बढ़िया बनाओ, आप 4-5 हैकाथॉन्स में पार्ट लो, आप एक प्रोडक्ट बनाओ. If things go well, you will go from you will go from personal project to hackathon project to a startup to an actual big company. And this is the ideal path where we want people to go through when they come to Fleek. And if not, if you don't enjoy working here, if you have problems or whatever reason it is, you can always build anything else. Which is why मैंने ये बोला ना कि the most important thing for an engineer is to first have good web 2 fundamentals, because that is what makes you irreplaceable. Web3 तो cherry on top है. And with Web3 you get opportunities, access, decentralization जो Web2 नहीं दे पाता. But अगर आपको Web2 आता होगा तो आप कुछ भी बना सकते हो. It is irreplaceable. And I will not argue, मैं ये नहीं बोलूंगा Web2 बेकार है. क्यों बेकार है? Web3 is an extension because of Web2. So that is very very important. Yeah, hope this was helpful. Yes. Thank you, sir. My pleasure, man. Anybody else?
Cool. Awesome. Also, let me see. Okay, Diksha has a question. Hey, Diksha, what's up? Yes, you have. Good evening, sir. Good evening. Sir, I wanted to ask that how does a NFT marketplace work? Very good question. Would you guys be open to me sharing my screen and showing you an NFT marketplace? Okay. I think some heart reacts are coming. ठीक है, मैं दिखाता हूँ. I also feel I should add NFTs to my own PPT. A lot of people are interested in this. It might help. So cool. Check this out. Is my screen visible? Can anybody give me a thumbs up or a thumbs down? Yes, it's visible. Perfect. Thank you. So see, these are all NFTs. Okay. अब NFT का मतलब ये है कि ये एक कोई एसेट है जो यूनिक है, इसके तरीके का दुनिया में सिर्फ एक है. जैसे फॉर एग्जांपल, आई गिव यू अ वेरी नाइस एग्जांपल. अगर आपका कोई आइडेंटिकल ट्विन नहीं है तो आप भी एक एनएफटी हो. सोच के देखो, मैं भी एक एनएफटी हूं. आई डोंट हैव एन आइडेंटिकल ट्विन. मैं अकेला ही हूं दुनिया में मेरे जैसा, तो मैं भी एक एनएफटी हूं. ठीक है. नाउ these NFTs are basically, they don't just have to be photos. They can be gaming NFTs as well. Games का भी NFT बन सकता है, memberships का भी NFT बन सकता है. सपोज मैं अपने क्लब की मेंबरशिप को एज एन NFT बेचना शुरू कर दूं, तो जो खरीदेगा वो अंदर आ सकता है. और इन सब फोटोज के पीछे ना कोड रन हो रहा होता है. ऑब्वियसली फोटो तो आपको दिखने में अच्छी लग रही है, आर्टिस्ट्स की बहुत हेल्प कर रही है, नॉन टेक कम्युनिटीज को बहुत मोटिवेट कर रही है, लेकिन इसके पीछे कोड रन कर रहा है जो इसको चला रहा है, जो इसको एग्जिस्ट करवा रहा है. Obviously, music is also a very big part. तो NFTs can exist in 100 different ways. ये तो हमने सबसे पहली चीज आज समझ ली. अब दूसरी चीज समझते हैं ये कि हमने NFTs पढ़ लिया. हाँ, जब आप कोड रन करते हो एक NFT के पीछे तो वो कोड लिखना भी तो पड़ता है. ठीक है. अब वो कोड लिखा जाता है इन अ लैंग्वेज कॉल्ड सॉलिडिटी. सॉलिडिटी एग्जिस्ट करता है इथेरियम इकोसिस्टम के अंदर. तो नाउ अगर मैं थोड़ा सम अप करना शुरू करूं, NFTs कैन बी ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स. दे कैन बी फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक, मेंबरशिप्स, इंश्योरेंस पेपर्स, कुछ भी आप एनएफटी बना सकते हो. ठीक है. एंड द कूल पार्ट इज दैट बिहाइंड द सीन्स some kind of code is working and this code lives on the blockchain. When I say something is an NFT, it means that it is properly unique and इसके तरीके दुनिया में एक exist कर सकता है. um, Before I continue, Diksha, do you have any more questions or any more things that I can answer and help you out with? मैंने मार्केट प्लेस तो वैसे बताया ही नहीं आपको. वेट, लेट्स कंटिन्यू पहले. सो मार्केट प्लेस में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने एनएफटीज को लेके आते हैं, वो यहाँ पे पूल कर देते हैं. एंड व्हाट मार्केट प्लेस डज इज कि एज एन आर्टिस्ट आपको थोड़ा सा कट मिलेगा फॉर एवरी टाइम योर टोकन इज सोल्ड. तो ये सारे टोकन्स है. ठीक है. ये आपका रुपीज, डॉलर्स, यूरोज, ये सब आपका वो है, अगर मैं आपको वेब 2 से कंपेयर करवाऊं. एंड जितनी बारी ये बिकेगा, मैं अगर आर्टिस्ट हूं इसका, तो मुझे थोड़ा सा पैसा मिलेगा. ठीक है. और आप नोटिस करो 0.714 ईथ, इसकी ये लास्ट सेल देखो, इसकी जो राइट साइड वाला है, ये वाला, इसकी लास्ट सेल देखो 0.74 WETH. एक बार इसको सर्च करके देखिए कितना होता है. 0.74 ETH. ये देखो इतने का बिका था ये एनएफटी. ये फोटो इतने की बिकी थी क्योंकि ये फोटो यूनिक है, इस फोटो के जैसा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. एंड दैट इज द होल बेनिफिट ऑफ यूजिंग एंड हैविंग एन एनएफटी. एंड एज एन आर्टिस्ट दिस इज फिनोमिनली पावरफुल. तो जब भी आर्टिस्ट एक एनएफटी मार्केट प्लेस के पास आते हैं, उनको रॉयल्टी मिलती है, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म मिल जाता है. सबको पता है कि यार मुझे कहाँ से एनएफटी लेना है, OpenSea.io से लेना है. अगर आप लोगों को एक्सप्लोर करना है ना, इसका लिंक मैं ये किसी तरीके की तो चैट में डाल सकता हूँ. Let me put this in the Q&A section. Yeah, let me put this here. I hope you all can see Q&A. उसमें लिंक है, आप सब भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है. Can quantum computer break blockchain? No, it cannot, because the second you notice कि यार डेटा चेंज होने लग गया है, कोई कंप्यूटर हैश होने लग गया है, before 51% of the network is captured, वो हटा देते हैं उसको. That is how computers work. And ये सब ना ब्लॉकचेन मैकेनिज्म के अंदर बनकर आता है, इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते. ये उसमें होता है कि अगर मैं अटैक नोटिस कर रहा हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली उन कंप्यूटर्स को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, नेटवर्क से किक कर दूंगा. ठीक है. Cool. I hope this was helpful, Diksha. Let me know if you have any follow-up questions. Next up, we have Jatin Chabra. What's up, Jatin? Wait, I don't think you have access. Let me quickly give you. There you go. Jatin, you can unmute your mic now.
Okay. In the meanwhile, I'll also give Krish Mishra access. Krish, you can also unmute. Ask your question. हेलो सर, माई सेल्फ कृष मिश्रा. आई हैव दिस क्वेश्चन कि जब जैसे आपने बताया एनएफटी लेते वक्त जो ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर चांसेस नहीं रहते कि डेटा कैप्चर हो जाए या फिर मतलब लीक आउट. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. डेफिनेटली होते हैं, बिकॉज आप नोटिस करो कि इवन दो आपका जो डेटा है वो ब्लॉकचेन्स के ऊपर जा रहा है, ट्रांजैक्शंस वहां पर हो रहे हैं, एनएफटीज ब्लॉकचेन्स पे रहते हैं, देयर आर स्टिल वेब 2 सिक्योरिटी मेजर्स दैट यू नीड टू टेक. अगर आपने ब्लॉकचेन वॉलेट बनाया है तो उस वॉलेट का एक्सेस किसी और को मत दो. अगर आपने कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करा हुआ है तो उस कंप्यूटर में तो कुछ खरीदो ही मत. These are mistakes that I've done in the past. So I'm warning all of you कि if you have any sort of compromisation on your system already, please do not run any sort of blockchain transaction on it. And there are problematic और bad actors in this ecosystem. flashbots हो गए, MEVs हो गए. तो ये जितने भी लोग हैं ये क्या करते हैं, ये आपके वॉलेट को जैसे ना जैसे करके हैक कर लेते हैं, वॉलेट की की ले लेंगे, वॉलेट का एक्सेस कोड ले लेंगे, कुछ ना कुछ तरीके से ले लेंगे, एंड फिर आपके अकाउंट में अगर कभी भी पैसे आएंगे तो उसको निकाल लेंगे. तो जो बेसिक कॉमन सेंस होती है ना यार, कि अपना पासवर्ड शेयर मत करो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखो हमेशा, और रैंडम सॉफ्टवेयर मत डाउनलोड करो, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर मत डाउनलोड करो, उन सबका यही बेनिफिट है कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन तभी कर पाओगे जो आपका वेब 2 लेयर सिक्योर है, वेब 2 लेवल पे आपके पास हर तरीके की सिक्योरिटी है. So good question and very, very important question as well. Thank you so much for asking that. Cool. Jatin, I think you are next. You can also ask your question. I think you already have wallet there. Sorry, wallet microphone there. I'm still stuck on the blockchain. Yeah. I'm also opening the Q&A section. So if you guys are feeling okay, roadmap. Yeah, very, very good question. Roadmap की थोड़ी बात कर लेते हैं. बिकॉज मैं बताऊंगा तो 100 लोगों को, पर फॉलो सिर्फ 5 ही करने वाले हैं. तो उन 5 लोगों के लिए स्पेसिफिकली रोड मैप की बात करते हैं. ठीक है. आई पर्सनली डोंट बिलीव इन रोड मैप्स बिकॉज आई फील इट्स जर्नी. मैंने आज जो सीखा वो शायद कल रेलेवेंट भी ना हो. बट एनीवे, टू गेट यू स्टार्टेड, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट. आज रात को अगर आपको ये 3 चीजें नहीं आती, even I would say shut down this session, go and study HTML first. Those are your fundamentals of computers. ठीक है. HTML CSS and JavaScript, ये 3 चीजें आनी चाहिए. अगर आप अपनी खुद की एक प्रोफाइल या फिर पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज बना सकते हो इन 3 लैंग्वेजेस को यूज करके, तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो. ठीक है. उस पे आपको बेसिक आता है, बहुत बेसिक आता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज इट इज सो बेसिक कि जॉब इस पे भी अभी नहीं लगेगी. द नेक्स्ट स्टेप इज React. React.js is a framework that has proven to become evergreen. There are so many websites today that are working in React, so many companies that are hiring in React. And even if you don't get a job, you can always freelance as a web developer if you know React. So next step is React. It is a JavaScript framework that runs websites. जब आपका React हो जाए तो अब आपको फ्रंट एंड आ गया. ठीक है. दिस इज माय बेसिक असम्पशन. एंड व्हेन आई से React हो जाए, कोई ऐसे प्रो नहीं बनना. मतलब जो आपने HTML CSS से बनाया था उसको React पे बनाना है. सिंपल. ये बनते ही आपको बैकएंड थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा. Node.js क्या होता है, Express क्या होता है, SQL से कैसे कनेक्ट करूं, MongoDB से कैसे कनेक्ट करूं. जब ये बेसिक चीजें आ गई तो एक फुल स्टैक ऐप बना के देखो, जो आपने खुद का बैकएंड बनाया, खुद का फ्रंट एंड बनाया, कॉल लगाओ फ्रंट एंड टू बैकएंड, API बनाओ, अपना कॉल लगाओ, देखो डेटा जा रहा है नहीं जा रहा. जब वो हो जाए उसके बाद आओ, एंड you already know blockchain fundamentals now. There is nothing more you need to know in terms of blockchain fundamentals. So now you dive into something called Solidity. And then I have a tutorial, I think it is on Twitter rather, and on there you can sort of understand how you connect your blockchain smart contract or your Solidity smart contract to a front end, and wahan se you can learn and sort of move forward. So yeah, that would be an ideal roadmap. I would reiterate कि यार Web 2 and basics of Web 2 समझना बहुत important है. उसके बिना there is no future. And a lot of people run away from coding because ये भाई बहुत मुश्किल है यार, starting में मेरे को समझ नहीं आ रहा. And यार starting में everything is difficult. If you see yourself happening that 24 lakh per annum, 30 lakh per annum package after year, the only way to do that is get started today, right? Who would I hire? Somebody who has 3 years of experience or somebody who learned
React last night. Obviously, 3 years of experience. So if you're in first year of college, you have the benefit of time. Abhi use karo usko, सीखो चीजें. Okay, stop. Oh, it's fine to have fun, but I would say utilize this time and get skills before you get anything else. Let's see, why did NFT market slow down then, even after you gave its benefits? Okay, so in general, the entire global market was down for almost 1.5 years. Like in the past, it is still very much down. It is not bullish at all, but वो होगा future में. The thing is that when market goes down, NFTs का जो benefit था उससे ज्यादा लोगों को थोड़ा loss दिखने लग गया. There were of course some problems around legitimacy, problems around security, and जैसे जैसे ये market का decline आता रहा, people thought कि भाई हम घर बचाएं अपना या ये फोटो को बचाएं. That was the major question they had. But it has slowed down, but it has not died out. Even right now, you can see these photos being sold for 15,000 rupees each. Was it rupees or was it something else? Units, tens, 100,000, 10,000 lakh. Oh, my bad. 1,36,000 ka bika hai, not 13,000. 1,36,000. So even if it has slowed down, I feel कि एक photo 1.3 lakh का बिकने का बुरा नहीं होता. I would rather do this than anything else. So yeah, that's majorly how I would answer that question. Anything else, guys? Cool. I think that's all from my side. I would revert back to namespace community, and I hope to stay connected with all of you on Twitter. And you guys already know where to find me. This is me. Hope to see you all very, very soon. Back to you, Lavanya. Thank you, everyone. I'm sure that after this, you're all ready to kickstart your journey in the field of blockchain technology. As we conclude this event, we encourage you all to seek out new challenges and pushing the boundaries of what you can accomplish. Remember that success is not about just winning competitions, but about the journey of growth and improvement that comes with it. With that being said, now it's time to wrap up this session. It was really good to see your enthusiasm and passion till the end. But before we end, let's unfold the surprises of this session. The closing ceremony of TechXcelerate 2.0. Am I audible? Yes, you're audible. Okay. The closing ceremony of TechXcelerate 2.0 will be held at the Microsoft office, Gurugram, on 28th January from 11 a.m. onwards. Selected students shall get the opportunity to attend it. And there's yet another surprise for you all. Mark your calendars for March 3rd week, that is 16th and 17th March. We are doing something special and you're a part of it. And guess what? Hackazard, a 24-hour offline hackathon at BPIT. There are cool prizes, not just for the champions, but for everyone. Details coming your way soon. The prize pool is more than 50,000 with super cool goodies and swag. So get excited and buckle up to be a part of Hackazard, more than a hackathon in which you will explore, create, innovate, and win. I also encourage everyone to scan the QR code to give the feedback of this session. Thank you. Thank you so much, everyone, for your precious time. Yes, Arman, do you want to say something?
I would request everyone to scan this QR code to register themselves for the Hackathon event.